Bestia cutting through the sea. The Athenian navy is scrambling. Ah! Let their blood feed the sharks. The Athenians will retaliate for what I've done, unless we hit them first. If that's the plan, we attack their commanders. Athenians are sheep. Kill the shepherd, and the flock will flee. March on them and they'll see you coming. I work better alone. I'll take care of these commanders. You're going straight for their throats. Still, leave some Athenian blood for me. When the commanders are dead and more Spartans arrive, there will be plenty of blood for both of us. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी गेमिंग चैनल में असासिन क्रीड ओडिसी के एक और नए भाग में पार्ट 10 में। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम हमारी मदर से वहाँ पर मिले और हमने जो जो मिशन किए वो लोग आप खुद जाकर वहाँ पर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थोड़ा सा बता देता हूँ हमने क्या क्या किया। तो हम हमारे मदर से मिलने के लिए वहाँ पर नेक्सस गए थे। वहाँ पर हमारी पहली बार मुलाकात हमारी मदर से हुई और वहाँ पर जो पेरोस का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया। तो फिर हम अभी आ गए यहाँ पर लेकोनिया में, जहाँ पर हम पहले रहते थे। पहले हमारा घर था यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर दिखाया था। तो आगे के जो कल्ट को ख़त्म करने के मिशन है और जो भी मिशन है हम हमारी सिस्टर को भी वापस लेके आएंगे, वो सब मिशन है हम यहीं पर करेंगे। तो चले फिर इस वीडियो को जो है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ताकि फास्ट ट्रैवलिंग में हमें मदद हो। और यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी मदर को मिलेंगे। तो डेवलपर्स ने म्यूज़िक बहुत ही अच्छा सेट किया और बहुत ही बढ़िया सा म्यूज़िक है। जिस ज़माने की गेम है उस ज़माने की फीलिंग भी आती है इसमें। Lamb, you made it. I trust the seas were favorable? Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? Not yet. You should. The answers to many of your questions are there. Your father would be proud to see how you've grown. For now, let's deal with what needs to be done here. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. As much as I curse this place for what it did to us, it feels more like home than Kefalonia ever did. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the Puppet King if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. तो मदर बता रही थी कि हम थेरा जाकर आए, हमारे फादर के बारे में जानकर आए कि नहीं, लेकिन हम अभी नहीं गए हैं। पहले जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करनी होगी कि जो हमारा जो किंग है यहाँ का स्पार्टा का, वो जो है कल्ट का पपेट हो गया है। तो उसको पहले वो जो है छुड़ाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो। लेकिन अभी हमारी मदर हमें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहती है, तो पहले वहाँ पर जाते हैं। No matter how far I ran, I never could escape them. I know. Did you put memories of us in that box? तो मदर हमारी नेक्सस में रह रही थी, तो वो स्पार्टा के बारे में भूल ही गई थी। वो बता रही थी कि जैसे कि एक बॉक्स में पैक कर जैसे सब यादें जो है हमने समुद्र में डाल दी थी, ऐसा बता रही है वो। लेकिन हम जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो मेमोरीज जो है अनलॉक हो रही है सब। वैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया के किसी भी छोर पर चले जाएं, लेकिन जो घर है, आखिरी छोर हमारा घर ही रहता है। घर पे जाकर ही शांति मिलती है। This is where I first trained you to use your spear. Hesitation only hastens the grave. झिझक हमेशा कब्र में जल्दी पहुंचाती है। You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Alexios, wait! You shouldn't interfere. This is Spartan training territory.
I can't stand here doing nothing. I'm going to help them. बहुत अच्छी सी बात हुई। दो ऑप्शन है हमारे पास, मैरी के पीछे जाना है या तो फिर वुल्फ से बच्चों को बचाना है। तो हम पहले बचाएंगे वुल्फ से, बाद में मैरी के पीछे जाएंगे। Pater? I'm here. I'm so cold. The sea that will carry you is very warm. I'm sorry I yelled at you. I was angry. It wasn't your fault. Shh. You have nothing to be sorry for. He died with honor. His death was unnecessary. What are you doing here? These boys were in trouble. I thought I'd help. No, he didn't! Don't lie to me, boy! You should be ashamed of yourself. And you. These boys are weaker now because of you. The Spartan army will be weaker because of you. I should kill you where you stand. अबे जाबे, Are you all right? What happened? I couldn't just stand by and watch. The Ago Yi is what turns boys into men, and soldiers into Spartans. You have only made them weaker by interfering. What good are they to anyone if they're dead? Alexios, please. This isn't Kefalonia, Naxos, or anywhere else. This is Sparta, and breaking Spartan law can get you killed. Believe me, Mater. I know exactly what breaking Spartan law gets you. Come, let's go home. बे यार कैसा लो है, कोई मरता है तो मरने दो, हेल्प कोई मत करो। अभी मरने के बाद थोड़ी ना कोई सोल्जर होगा। हम कैसे उसको वीक करेंगे? अगर बचेगा तो उससे सीख कर कुछ करेगा। यार गजब है। इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसे खतरे में फंस जाए तो उसकी रक्षा उसे खुद करनी आनी चाहिए, ऐसा दिखाना चाहते हैं। उसकी कोई हेल्प करेगा तो वीकर हो जाएगा, लेकिन वो तो मर गया ना यार। Slaves? Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians, and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. मदर तो मानने वाली है नहीं, उसके हिसाब से हमने गलत ही किया है। चलिए ओके, तो चलिए पहुंच गए हम पुराने घर के पास हमारे, जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaos was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, he's going to bring glory to Sparta. If you were a better man, he wouldn't have let go of me. My heart broke that day. But if we are ever to heal as a family, we must stop reopening old wounds. Some wounds never close. Do you remember the first time you held your sister? I was scared I'd break her. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held her so tight. I thought you would squeeze the life out of her. She turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Good to see you, Brasidas. It's been a long time since I rescued you from the warehouse fire in Corinth. That's not how I remember it. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home, We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Brasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaos' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it. But he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful.
He can't still be mad I broke his nose. You what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us. Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. So, to get our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Sounds easy enough. Find me in the throne room when it's done. And where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. हमारा ये जो मकान है, घर है, वो सेंटेटर को दे दिया गया है क्योंकि निकोलाउस के बाद जो आखिरी वारिस बचा था वही था। हम तो निकल गए थे यहाँ से, इसीलिए तो किंग ने उसको ये मकान वारसदार के रूप में दे दिया था। अजीब सिचुएशन है, जिसके साथ हमें लड़ना था और जो हमें मारना चाहता है उससे ही मिलकर हमें ये घर वापस लेना है। ओके, तो अगर हमें हमारा घर वापस चाहिए, यानी कि मकान वापस चाहिए, तो ये जो स्पार्टन सैनिक है वो हेलोट्स कर कोई उनको वेपन सप्लाई कर रहे हैं, तो वो वेपन सप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ये जो हमें मिल जाती है तो शायद हम अपना घर वापस ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रसदास से मिलने जाना होगा, तो वो यहीं पर कहीं पर है, तो उसको फिर ढूंढ कर मिलते हैं उससे। There you are. I can take you in to see the kings when you're ready. Waiting won't make this easier. They won't look kindly on you asking for favors without offering some kind of help first, like taking care of the soldiers arming the Ilotes. I'm tired of doing people favors. Let's get this over with. Come on then. Your mother's waiting inside. Where are the kings? अबे यार बेइज्जती कर दी इसकी तो। What do you say now? You've made your point, Archidamos. I yield. Another 2 squadrons to Viatir, then. As I said. Is that how they solve arguments? Sometimes. Archidamos's guard has improved. He should thank me. Brasidas, you've come with news. Let's hear it. My kings, may I present Merini, descendant of Leonidas, and her son Alexios. I heard you'd come back. How dare you step foot on Spartan soil? I should cut it off for what you did. They helped us secure Corinthia, my king. I beg you to listen. They are descendants of Leonidas. For that reason alone, they should be allowed to speak. And if we don't like what they have to say, you can chop off any limb you see fit. Speak, Marini. Why are you here? I have returned to reclaim my Spartan citizenship, to reclaim our home. You exiled yourself. Your son killed an elder and ran. Not to mention the crooked nose he gave you. My family was betrayed, my king. Sparta was betrayed. We've come to expose these traitors. You haven't cared for Sparta for many years. Your elders had both her children thrown off a cliff. They tore our whole family apart. Alexios, not here. But the minute she thought Sparta was in danger, she came back. She brought us both back to help. How dare you accuse her of not caring? I've heard your grandfather couldn't control his temper either. Marini has made her intentions known. What are yours? My intentions are to hunt down those who betrayed my family and Sparta, and kill them. And who exactly do you think betrayed Sparta? That's what I'm here to find out. First, prove yourself loyal. Bring glory to Sparta, and redeem yourself in the eyes of the gods. Until then, neither you nor your mother have a right to your lands. Tell me what I must do, and it will be done. The Spartan army fights the Athenians in Viotia. Join the commandos there. Come back victorious, or do not return.
You expect me to win a war when your own troops can't? My troops will crush any army under Helios. And if you want your home back, you'll go to Viotia and mind your tongue! Good. You're learning. You will find my commander at Mount Helicon. Give him this and tell him I sent you. Not soft. 2 kings, 2 tasks. And what would you have me do? Conquer the rest of the world? I'd leave the conquering to Archidamos. The Olympics will be starting soon in Elise, and our fighting champion requires an escort. You want me to be an escort? I want you to make sure the Spartans return with a wreath. That's how he'll bring glory to Sparta? By winning an event in the Olympics? Not an event, my king. By making sure Sparta wins the entire Olympics. Perfect. One last thing. When you come asking a favor, it is customary to bring a gift, but you didn't. So now I will choose your gift for you. A wolf has been attacking farmers on the Discuri Peninsula. People say it's King Lycaon himself, cursed by Zeus to live out his days as a wolf. I will kill this animal and bring you its head. You have your orders. We'll see you when your tasks are completed. If they're completed. I'll get them done, and you'll give us back our home. There's some Spartan left in you after all. Brasidas. Show them out. Next. That went well. Considering you still have your head on your shoulders, yes, I'd say it went very well. The kings were generous to give us a second chance. And all I have to do is win the Olympics. And a war. Is there anything you need to know before setting off? I think I'm ready. And you? What will you do while I'm gone? I received a message just before we went in. What kind of message? A clue to the whereabouts of another cultist. I'm going to Arcadia. Alone? The fates are smiling on us. I was ordered there. We can travel together. That would be helpful. My thanks. I'll meet you both in Arcadia then. Safe journeys. ओके तो बी एस स्पार्टा हमें हमारी लॉयलिटी जो है इनको प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो स्पार्टन किंग को हमें भरोसा दिलाना होगा कि हम अच्छे हैं और स्पार्टा लेके कुछ करना चाहते हैं और स्पार्टा को जो बर्बाद करना चाहते हैं उसे ढूंढने ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। ओके लिसन, जो मैंने पहले आपको बताया था कि किंग ने ही ये किया हुआ है मारने के लिए, किंग ने नहीं किया हुआ है, उसकी तरफ से किसी ने मोहर लगाकर आगे भेजी थी। तो वो कौन है उसे हमें ढूंढना है। तो हमारे पास 3 टास्क आए हुए हैं। एक तो वुल्फ को मारना है जो फार्मर को परेशान कर रहा है वो, दूसरा जो है ओलंपिक को जीतना है और तीसरा जो है हमें स्पार्टा को जीताना होगा एथेंस के सामने वॉर में। तो चलिए सबसे पहले हम ओलंपिक वाला ही चूज़ करते हैं। तीनों को पूरा ख़त्म कर कर हमें जाना है वापस किंग के पास। You're new. If it's training you want, we don't just take anyone. Do I look like I need training? I was sent by King Pausanias. My apologies. I didn't realize you were here for testing. Next time, think before opening your mouth. Typical Spartan. Don't understand that honey can get you more than vinegar. I need to get this champion of yours to Elise. I hope he lives up to your promise. Oh, he will. Look for his camp on the southernmost island in Messenia. Time to get this. तो इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए हमें टेस्टिकलिस कर कर हमारा जो ओलंपिक का चैंपियन है उसको ढूंढने जाना पड़ेगा। वो यहाँ से बहुत ही दूर है, तो चलिए उसको लेने चलते हैं पहले। तो उसको हमें लेकर आना होगा वापस यहाँ पर चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो काफ़ी सारा सफ़र काट कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सिनसिनरी बहुत ही अच्छी थी तो सोचा कि आपको दिखा देते हैं, वरना डायरेक्ट पहुँच जाते हम। ओके चलिए तो पहुंच गए यहाँ पर। तो टेस्टिकलिस से बात करते हैं, वापस ले जाते हैं इसको। What do you want from the great champion Testicles?
Can't you see I'm busy? I'm here to take you to the Olympics. Olympics? Fuck yeah! I'm going to be the champion. Champion! Cause I testicles! Good. Let's set sail. Oh no, can't possibly go now. Training, see? And I don't know if I'm up to going sailing on your boaty. There's nothing to be nervous about. We'll be there cheering you on. But what if I don't win? They'll build statues and write poems about you. But first, we need to get you there. To the Olympics! The people need me! Well, we going? He better fucking win. बे यार ये तो नशेड़ी है साला, कैसे जीतेगा ये। और इसे एलिस लेकर जाना है, वो भी यहाँ से बहुत दूर है। टेस्टिकल्स को लेकर हम निकल गए हैं, एलिस के लिए काफ़ी दूर है। तो चलिए आपको बाद में वहाँ पर पहुँच कर मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, पहले की तरह ही जो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गया है, मैं जब भी बंद करने का सोचता हूँ तो उसको क्विट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बंद कर देता हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो वापस से ये जो हमारा टेस्टिकल्स वाला जो मिशन था वो पूरा ही ऐसे ही चला गया रिकॉर्डिंग हुए बिना। तो क्या हुआ था मैं बता देता हूँ आपको। तो उसमें हुआ ऐसा था कि टेस्टिकल्स को वहाँ पर लेकर जाते हम जहाँ पर स्पार्टा के साइड से वो खेलने वाला था वहाँ पर, लेकिन वो पानी में गिर जाता है किसी तरह, तो मर जाता है। तो उसके बदले में जो है एलेक्सियस लड़ता है फाइट और जीत जाता है। और अभी के मिशन में ऐसा है कि यहाँ पर जो एल्किबिदास भी था, तो आगे आपने देखा ही होगा। तो अस्पसिया के घर पर जब पार्टी थी तो वो हमें मिला था, हम उसके साथ रूम में गए थे, वही उसको जो है जहर दे दिया है। तो वो किसने दिया है वो हम ढूंढने जा रहे हैं, उसका एंटीडोट क्या है वो हम ढूंढने जा रहे हैं इस मिशन में। जहाँ पर क्लू मिला था वहीं पर हम पहुँच गए। तो उसके साथ साथ कईयों को ये जहर दिया गया हुआ है। This proves it. Poison. It must have been added to the food and wine. This food smells strange, but it's not rotten. A supply list for the celebration. And the merchant's name. Time to pay this Priam a visit. तो जो फंक्शन सेलिब्रेट हुआ था उसमें वाइन और फूड में ये जहर मिलाया गया था। तो जहाँ से ये फूड सप्लाई हुआ था तो वहीं पर हम जा रहे हैं उस मर्चेंट से मिलने के लिए। तो वो मर्चेंट यहीं पर नज़दीक में ही रहता है। Sanctuary of Olympia, where the greatest athletes compete for fame and glory. Now, we're going to have a conversation. Please, I was just doing what I was told. Now you'll do what I tell you. Oh, please. I thought we were just trying to make them slow. You know, so they lose. Win a few drachmi. My friend Alcibiades may already be dead, and you're talking about drachmi? The golden boy. I was there. He didn't have much. If you can get him the antidote, he'll survive. Tell me where it is. They're sure to have it at Fort Coroibos. A man there paid me to do this. Look there. First you must pay and get out of my sight। क्या करें? First you must pay, यही करते हैं। Whoever did this will pay, but I'll take care of you first. अबे साले भाग गया। तो एथलीट को स्लो करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन उसमें अल्किबियास फंस गया है। तो एंटीडोट हमें बताया कि कहाँ पर है, तो बस अभी वहीं पर हम जाएंगे। और वो जो एंटीडोट है वो कोराइबोस फोर्ट में है, तो बस वहीं पर हम जाएंगे अभी। तो चलिए पहुंच गए हम हमारे लोकेशन पर। तो इकारोस को बुलाते हैं और देखते हैं अंदर कितने एनिमीज है, फिर अंदर जाएंगे। This must be the antidote. तो एंटीडोट तो मिल गया है, तो देख लेते हैं अभी कितने एनिमीज है अंदर।
तो काफ़ी सारे, लेकिन छुपते छुपाते जाएंगे और एंटीडोट लेंगे और वापस आ जाएंगे। बहुत धमाल हमें नहीं चाहिए। तो गेम के जो पार्ट है वो बहुत ही देर से आ रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी काम भी रहता है तो इसलिए नहीं कर पाता। जितना हो सके उतना करता हूँ। और जल्द ही हमने गोस्ट ऑफ सुशिमा भी स्टार्ट करनी है इसके बाद, तो इसको जितना हो सके फटाफट से हम गेम पूरा करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो धीरे धीरे कर कर जाएंगे, कोई देख ना ले। तो सामने से आ रहा है मरने के लिए, दिक्कत हो सकती है इधर, क्योंकि 2 है और दोनों को पता चल गया। एक चला गया, चलो वापस चला गया, क्योंकि दोनों को साथ में असैसिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक को पता चल ही जाएगा। तो एक एक करके है, वो इतना अच्छा है भैया। नज़दीक यार, दूर जाना पड़ेगा थोड़ा। तीनों के तीनों साल इधर। अबे साले पूछ रहा है तो कोई होगा तो थोड़ी ना बताएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस। चलो इधर तो कोई नहीं है, मैदान साफ हो गया है। अभी धीरे से चले जाते ऊपर, एंटीडोट वहाँ पर ऊपर ही है। अबे साले क्या कर रहा है, ऊपर जाना है। तो चलिए, हमें हमारा एंटीडोट मिल गया है। तो चलिए अभी फटाफट से पहुंचते अल्केमिदास के पास। उसके पास वक्त बहुत कम है। बे यार, ये तो चले निकलते फटाफट से। किसी कोई दिख, अरे यार देख लिया, ये लंबा होने वाला इधर। साला चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को भी बुला रहा है। क्या बात है एलेक्सियस, वाह। कुछ मूव इस गेम के बहुत ही बढ़िया है। ये सब जो स्ट्रॉन्ग अटैक दिए हुए हैं बहुत ही बढ़िया है, वरना दिक्कत हो जाती इन लोगों को मारने में। तो सबको बुला लिया है इन लोगों ने, तो वो सब आए उससे पहले हम भाग जाते हैं यहाँ से। बे यार तेरी, ओह शिट, यहाँ से भाग जाने बेहतर रहेगा। आई थिंक लाइफ भी काफ़ी कम हो गई है। बच गए, बाल बच गए। तो कहीं बार भाग जाने में ही भलाई रहती है। हमारे कृष्ण भगवान भी भाग गए थे, उसको भी रणछोड़ कहा गया है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि कहीं भी ऐसा लगे तो रण छोड़कर भाग जाइए। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भाग जाते, लेकिन वापस से आएंगे हम बदला लेने के लिए। गलत जगह पर घुस गए। ये ओके, ये राइट प्लेस है। नोप, यहाँ पर भी नहीं है, तो शायद घूम कर जाना पड़ेगा। बे यार एलेक्सियस, मतलब कि कहीं पर भी चढ़ जाता है तू यार। बे यार पूरा घूम कर जाना पड़ेगा ये तो।
Here, I have the antidote. More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. I can already feel my stamina returning. Didn't you have one last fight in the Pancration? Let's go. तो ये एंटीडोट भी हिपोक्रेटिस ने बनाया था। तो अभी लास्ट फाइट हमारी बाकी है पंक्रांटियन में। नाम साले ऐसे कि बोलने में भी दिक्कत रहती है। तो चलिए पहुँचते फटाफट से वहाँ पर। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वापस से याद दिला दूँ कि ये सब हम राजा जी का जो है दिल जीतने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो हमें हमारा घर और स्पार्टा में रहने के लिए परमिशन दे दे इसीलिए। और हम जो है यहाँ पर स्पार्टा की तरफ से लड़ रहे हैं। Your next opponent is Dorios. Claims to be descended from Heracles himself. I'm ready. You ever faced an Olympic champion before? I've fought all sorts of people, and they were armed with more than just their fists. Let me in there. ओलंपिक चैंपियन है कि उसका बाप हो। हम किसी से भी लड़ेंगे भाई। Of course. And if you win, you should come dine with me sometime. Maybe I'll hunt you down after the event to take you up on your offer. साला कल्ट है। Of course. After the event. चलिए लेट्स फाइट विथ हिम। तो इसको मारेंगे हम और कल्ट का खात्मा करेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट अपोनियन है, तो ये जीत कर हम ओलंपिक चैंपियन बन जाएंगे। Let's get this over with. For Ira. We've seen our esteemed newcomer rise quickly to become a contender. But let's see how he does against our reigning champion, Dorios! चलिए लेट्स स्टार्ट। I'll squash you. बे यार ऐसा चैंपियन दो मुक्के में तो ढेर हो गया। Victory! Nikkei! The gods have looked kindly on these, our champions! But there can only be one winner! Sparta! Yours is eternal glory! तो उस समय भी ओलंपिक होते थे, उसमें भी कहीं कंट्रीज़ लड़ने के लिए आते थे। तो अभी स्पार्टा की तरफ से हम जीत गए हैं और स्पार्टा विनर हो गया है। चलिए क्वेस्ट कंप्लीट। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट मिशन है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैरी और ब्रेजिदास को हमें मिलने जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है वो, फिर उनसे मिटने जाएंगे हम। तो मैप बहुत बड़ा है तो थोड़ा खोजने में दिक्कत रहती है। तो जो मिशन का मार्क होता है वो दिख गया है। तो फास्ट ट्रैवलिंग कर कर फटाफट से वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैरी और ब्रेजिदास से मिलने के लिए हम जगह पर पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है वो तो मर्सिनरी वाला दिखा रहा है। और तेरी ये कौन है? Who are you? Me? I'm no one. But you. You're even godlier than Brasidas said you'd be. It should be your statue between these trees. Brasidas? What does he have to do with this?
Warrior, he said. Look for the mighty warrior with the broken spear. I added the godly bit. Brasidas knows a warrior when he sees one. Word of my deeds will outlive any statue. Of course. Your story should be sung from the mountaintops. In Arcadia, you are already a legend. Where is Brasidas? I need to speak with him. Of course you do. And the woman, you'd like to speak with her too, yes? Wait. She looks like you. Tell me where they went. I should. It's what Brasidas paid me for, after all. Then why don't you? He didn't pay enough. Today you die! मरने वाला है साला। ब्राजीदास ने पैसे इसको इसीलिए दिए थे कि वो हमें बताए कि वो लोग कहाँ पर गए, लेकिन साला बोल रहा है कि नहीं बताऊंगा क्योंकि पेमेंट पूरा नहीं किया है। पूरा मतलब डिसाइड हुआ था उतना दिया, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। अबे साले लालची, ये लो। ठिकाने पे आ गया साला। My story will outlive any statue. Who says that? Tell me where they are, or I'll cut that shit-eating grin off your shit-eating face. He said you had a nasty temper. He wasn't wrong. Tell me where my mother is, and you may walk out of here alive. You show mercy. Arcadia will give you none in return. Speak! You'll find them on a hill. A cliff overlooking Tegea. You said Brasidas didn't pay enough. Who did? The Archon. He's paying more for your head than Brasidas could afford in 2 lifetimes. Tell me who the Archon is. I want a name. Lagos. His name is Lagos, and he's the most powerful man in Arcadia. He who controls the grain, controls the world. Consider yourself lucky. I've seen enough blood. Oh, but you'll be seeing a lot more. Welcome to Arcadia, Alexios. तो ब्राजीदास ने तो इसको पैसे दिए थे, लेकिन हमें मारने के लिए ब्राजीदास से भी ज़्यादा पैसे इसको लेगोस ने दिए थे, जो आर्केडिया का जो है यहाँ का डॉन बना जाता है। तो हर एरिया का कोई कुत्ता होता है, वो ऐसा कुत्ता ही था। हाँ नहीं मतलब कि है, तो आगे मिशन में पता नहीं उसको मारने का होगा कि नहीं, तो होगा तो उसको मार डालेंगे हम। चलिए, ये तो मर गया। अभी इसने जो एड्रेस बताया था वहीं पर हम चलते हैं। Thank the gods you found us. I got your message. I killed the messenger. He betrayed you, Brasidas. These cultists Marini told me about. They knew you were coming and must have forced Lagos to place the bounty on your heads. Trusting anyone in Arcadia will be difficult now. Which is why I say we put that Archon's head on a pike. Our message to the Puppet King in Sparta will be clear. Let's find out more about what's going on in Arcadia. We should be able to solve this Lagos problem without too many beheadings. After what happened to the monger in Corinthia, that crowd wanted blood. Violence doesn't always solve problems. Whatever happens, we need Lagos alive. Arcadia is Sparta's breadbasket, and Lagos keeps it full. That man is working for the cult of Cosmos, not Sparta. Then we need to free him from their grasp. What makes you think he wants to leave? Bounties and threats aren't Lagos' style. He's a farmer, not a killer. Looks like I came just in time. You certainly did. But it's time to make a decision. Your strategy makes sense, Brasidas. Thank you. I'm glad you agree. You're letting sentimentality cloud your judgment. Thousands of Spartans depend on Lagos for food and protection. His death would bring chaos.
There's a farmhouse northeast of Tegea where he has a safe house. Meet me there before you do anything you'll regret. And what if Brasidas' plan doesn't work? The Archon hides like a coward in Fort Samikon. You can't miss that monstrosity. You could go after him now, but be careful. He's well defended. Then we must weaken his defenses. He's got barracks full of guards and silos full of grain. It would be a shame if any came to harm. I'll go see what Lagos is up to. Good luck, my lamb. You don't understand. This isn't just about fire and weed. This is personal. तो अभी एक दिक्कत हो गई है। लेगोस जो है वो कल्ट का आदमी है और कल्ट को मारने की हमने कसम खाई है, लेकिन एक दिक्कत और है कि वो पूरे आर्केडिया को फूड सप्लाई करता है और उसके खुद का फार्म है। तो अगर हम उसे मार डालते हैं तो दिक्कत पूरे आर्केडिया को होगी, क्योंकि वो पूरे फूड सप्लाई करता है यहाँ पर। तो अभी सोचने वाली बात होगी। तो पहले हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे और फिर उसका जो डिसीजन लेंगे। तो चले निकलते हैं, काफ़ी दूर जाना है हमें, तो पहुँचने ही वाले हैं। तो लेगोस जो है कहीं पर फोर्ट में है, फोर्ट सैमिकॉन इसका नाम है। तो पहुंच गए हम। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बाद में अंदर जाएंगे। तो शांति से अंदर जाकर डील करनी होगी उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी सारे गार्ड्स हैं। तो बाहर से ही जितना हो सके उतना नज़दीक जाएंगे उसके। अबे तेरी कौन देख गया? कोई देखना नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारे गार्ड्स हैं यहाँ पर, तो बात करेंगे या क्या करेंगे पता नहीं। तो असासिन का ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो मार डालते हैं। देखा जाएगा जो भी होगा वो आगे। काफ़ी सारे गार्ड है आसपास, तो शांति से इन सबको मारना होगा, मतलब कि सोच समझ कर मारना होगा, वरना पहले जैसे भागना पड़ा था वैसे भागना पड़ेगा यहाँ से। तो मेरा टारगेट मारने में लेगोस को ही होगा ज़्यादातर, ताकि उसको मारकर हम सीधा चले जाएं यहाँ से। तो भाई यार साले चलिए मर गया है। ये सभी कल्टिस्ट को एक बार कंफर्म करना पड़ता है मारने के लिए। तो सिट सालों ने रेइंफोर्समेंट बुला रही है, भागना पड़ेगा फटाफट से। तो काफ़ी सारी मर्सनरीज भी आ गए हमें मारने के लिए, तो हमें भागना पड़ेगा यहाँ से फटाफट से, वरना हम तो गए। हर तरफ मर्सनरी आ गए सभी, तो कई सारे हमारे दुश्मन आ गए, फटाफट से भागना होगा यहाँ पर। चलो अच्छा है, फोर्ट से निकल गए हैं, तो फटाफट से पहुंचते हैं ब्रजेदास के पास और ये सब हुआ वो बताते उसको। He's dead. This complicates things. One less cultist? Seems simple enough. Lagos was a dear friend once. I should have been there. I'm sorry, Brasidas. But when Lagos joined the cult, he sealed his fate. So you execute the Manga in public against my advice, and now you kill Lagos? If you were under my command, you wouldn't be anymore.
I don't follow orders. I do what I have to. So it's done. I suppose you'll be wanting to report the news to Sparta soon. We may have won the wreath, but the kings also wanted us to conquer the Viotians. True. You are needed there before we return. Marini, you are as determined as ever. I'm sure you will regain your house soon. With Lagos dead, arrangements must be made to ensure Sparta doesn't starve. Arcadia is safe once more. And the bounty is lifted. We are free to travel without fear. Then let's continue our journey. तो चलिए, हमारा एक और मिशन पूरा हो गया है। तो अभी आगे हम क्या करेंगे वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सीताराम, बाय।